Hello students, welcome to maths class. We are doing direct and inverse variation, chapter number 4. Today we will discuss time and work, time and distance. First of all, there are some points which you must know. Let's discuss those points. The first one is amount of work done by a person varies directly with time taken by him her to complete it. It means कि अगर कोई पर्सन काम करता है तो वो जितना काम करेगा उतना वो ज्यादा टाइम लेगा। अगर वो ज्यादा काम करता है तो टाइम ज्यादा लगेगा। अगर वो कम काम करता है तो कम टाइम लगेगा। इट मीन्स क्या हुआ? वेरीज डायरेक्टली, क्योंकि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। अगर एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। Number of persons performing a particular work varies inversely with the time taken by them. Number of persons कि कितने लोग काम कर रहे हैं। अगर कम लोग काम कर रहे हैं तो हमें उस काम को करने में ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उसी काम को करने में हमें कम टाइम लगेगा। Let's take an example of constructing a wall. We have to construct a wall. एक दीवार बनानी है। अगर हम वहां पे 10 लेबरर लगा देते हैं तो वो सपोज करो 4 दिन में उसको दीवार को पूरा कर देते हैं। लेकिन अगर हम लेबरर को बढ़ा देंगे, उन मजदूरों को, दीवार बनाने वाले मजदूरों को बढ़ा देंगे, तो वो क्या होगा? जल्दी दीवार बन जाएगी। तो इसका मतलब कम दिन लगेंगे। और अगर हम मजदूरों को कम कर देंगे तो क्या होगा? उस दीवार को बनने में ज्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब उल्टा हो रहा है। जब हम नंबर ऑफ पर्सन्स को बढ़ाते हैं तो टाइम कम लगता है, जब नंबर ऑफ पर्सन्स को कम करते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है। इसलिए दीज आर वेरीज इनवर्सली। स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय it is also vary directly to each other. If we have increased the speed of moving body, then we will cover more distance. If we decrease the speed of moving body, then we will cover less distance. In this case, if one quantity is increasing, other is also increasing. So it is direct proportional or direct variation. Speed of moving body and time taken to cover particular distance vary inversely with each other. Particular distance means fixed distance. If we increase the speed, then we will take less time. Suppose if we lessen the speed, then we will take more time. एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम लोग डेली स्कूल जाते हैं एक नॉर्मल स्पीड से। तो मान लीजिए कि आपका जो स्कूल से घर का रास्ता है वो 10 मिनट का है जब आप नॉर्मल स्पीड पे जाते हो। लेकिन अगर बाई चांस किसी दिन आप लेट हो गए जाने में, डिस्टेंस तो वही कवर करना है आपको, तो आप क्या करोगे? अपनी स्पीड बढ़ाओगे, थोड़ी सी चलने की स्पीड बढ़ाओगे या अपने साइकिल की स्पीड बढ़ाओगे, तभी आप कम टाइम में पहुंच पाओगे। दैट मीन्स अगर हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो टाइम कम लग रहा है, अगर स्पीड को कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। इट मीन्स these are very inversely to each other. Distance traveled with distance traveled and time taken by moving body, if speed will remain constant, vary directly to each other. अगर हमें ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो टाइम ज्यादा लगेगा, अगर हमें कम डिस्टेंस कवर करना है तो टाइम कम लगेगा। It means both are very directly to each other. Let's discuss some important formulas. Distance is equal to speed into time. Speed is equal to distance divided by time. And time is equal to distance divided by speed. Now come to the point, what type of sum you have to solve in this worksheet or under this topic.
आई एम गोइंग टू शेयर एन एग्जाम्पल विद यू। जिस तरह के सम होंगे इस क्वेश्चन में, उसमें होगा कि फॉर एग्जाम्पल कि एक ट्रेन है और वो एक ट्रेन जो फास्ट स्पीड से चल रही है या अपनी स्पीड से चल रही है, तो वो जो ट्रेन है उसे एक यहाँ पर खड़े हुए एक फिक्स पोल को, वो पोल कोई सिग्नल पोस्ट भी हो सकती है, जैसे जो ट्रेन्स के सिग्नल पोस्ट लगे होते हैं, वो कोई बिजली का पोल हो सकता है, वो कोई टेलीफोन का पोल हो सकता है, कोई भी पोल है, उसको क्रॉस कर रही है। तो हमें उस उस पोल को क्रॉस करने का टाइम पता करना है कि कितने टाइम में वो ट्रेन जो है उस पोल को क्रॉस कर लेगी। लेकिन ये कब माना जाएगा कि ये पोल क्रॉस हो गया? देखिए, जब इंजन बिल्कुल इसके पास यहाँ से स्टार्टिंग हुई, सी हियर, यहाँ से स्टार्टिंग हुई, एंड व्हेन द कंप्लीट द ट्रेन विल पास दैट पोल, जब वो पूरी की पूरी ट्रेन उस पोल को पास कर लेगी, तो उसको कितना टाइम लगा। अब यहाँ पर इस पोल की जो डायमेंशन है उसको हमने नेग्लिजिबल डायमेंशन माना। नेग्लिजिबल डायमेंशन का मतलब कि इसकी जो चौड़ाई है, मोटाई है, वो इतनी नहीं है कि उसको कंसिडर किया जाए। आगे और क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमें होंगे कि एक ट्रेन है, वो एक प्लेटफॉर्म को कवर करने में, क्रॉस करने में, या फिर एक टनल को क्रॉस करने में कितना टाइम लेती है। अब प्लेटफॉर्म तो का बहुत बड़ा होता है, टनल भी बड़ी होती है, तो उसको तो हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, उसकी लेंथ को, तो डायमेंशन को, लेकिन ऐसे पोल्स की डायमेंशन को हम निगलेक्ट कर सकते। Let's solve the example related to this topic. Your example is a train 400-meter long. This is the length of the train. Is running at the speed of 72 km per hour. This is the speed of train. How much time does it take to cross a telegraph post? Telegraph post means that kind of pole. First of all, see here, the length of train is given in meters, but speed is given in kilometer per hour. We will change this speed into meter per second so that this unit and this unit will become same. How we can change? We know that there are 1000 meters in 1 kilometer and there are 3600 seconds in 1 hour. How? There are 60 minutes in 1 hour and there are 60 seconds in 1 minute. 60 multiplied by 60 will become 3600. See here, the given speed is 72 km per hour. 72 multiplied by 1000. I have changed these 72 kilometers into meters by multiplying 1000. Now I will divide it by 3600 seconds. When we will reduce it into lowest term by cutting, you will get 20 meter per second. Per means 1 second. एक जो ट्रेन की स्पीड है वो 1 सेकेंड में 20 मीटर जाती है. पर मीन्स 1. नाउ वी हैव टू फाइंड द टाइम to cross the telegraph post. Prepare the table of this type. We have already made this kind of tables in previous worksheets. Here it is the distance covered and here it is time taken. We will first, we have this speed, because one speed is in kilometer per hour, other is meter per second. We will choose this one, meter, because the length of train is in meters. 20 meter. See here, 20 minute. In how much time? 1 second. 1. From where we will get this one? This par. Par means 1. This slash. Per second. In 1 second, train will move 20 meter. Now, length of train is 400 and we have to find the time. We have assumed x here. This is direct variation. In this worksheet, you have to check whether it is direct or inverse variation. How it is direct variation? If distance will increase, then time will increase, because more distance will be covered in more time.
So in direct variation, what we do? 20 divided by 1 is equal to 400 by x. Cross multiply and you will get this answer. You have solved this type of sum and the value of x will be 20. It means the train will take 20 seconds to cross the telepost graph. Here we have to find the time taken by a moving train to cross platform, bridge, tunnel. Crossing a stationary object. Stationary means fixed, that is not moving, only train is moving. Having some length, it is not same in your books, correct it, it is some length. Let us suppose train is coming from this side and this train has to cross this much length of tunnel. Let us suppose it is tunnel. And when it will be considered that the train has crossed when the complete train comes out of the tunnel. जब पूरी की पूरी ट्रेन टनल से बाहर आ जाएगी, ये देखिए जहाँ पे उसका बिल्कुल पॉइंट जो है लास्ट पॉइंट यहाँ पे वो बाहर आ, यहाँ से स्टार्टिंग से लेके when it enters this tunnel and when it crossed complete, how much time will be taken by a moving train to cross this tunnel? Let's solve the example of this type. A train 360-meter long, length of train is 360 meter, is running at a speed of 45 kilometer per hour. What time will it take to cross a 140-meter long bridge? This length is not negligible. इसे neglect नहीं कर सकते, इसे हम छोड़ नहीं सकते. इसको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड और है. First of all, because the length of train is given in 360 meter, we will change the speed into meter per second. Method is same which I have told you in last example. Multiply 45 by 100 divided by 3600. Then change it into lowest term by cutting. You will get 25 over 2. Then divide it and change it into points. 12.5 meter per second. Now what is the total distance? What is the total distance? Length of bridge is 140. Length of train is 360. Total distance will become 500. जब भी आपको यहाँ पे ब्रिज की लेंथ दी हो, प्लेटफॉर्म की लेंथ दी है, टनल की लेंथ दी है, तो आपने उस लेंथ को ट्रेन की लेंथ में प्लस करना है, तो वो टोटल डिस्टेंस बनेगा. नाउ लेट the required time to cross the bridge is x seconds. Draw the table, this type of table. Here it is distance, here it is time. 12.5 meter in 1 second. See here 12.5 meter per second. Per means 1 second. So I have written 1 here. And what is the total distance? It is 500. How it is 500? Length of train plus length of bridge. And this is, we have assumed the time taken is x. This is direct variation. Because distance is increasing, it means time will also increase. So in direct variation, we will divide 12.5 by 1. See here is equal to 500 over x. Then by cross multiplying, when we solve it, you will get 40. Means your answer will be 40 seconds. It means the train will take 40 seconds to cross that bridge. Here it is worksheet number 3. Solve this worksheet and share your doubts. We will meet again in next video soon with the solution of this worksheet. Thank you so much. I hope you will like this video. If you like this video, then press the like button and subscribe my channel. I'll keep sharing the videos of your next chapters during holidays also. So it will be beneficial for you, the subscription of my channel. You will get the videos notification through subscription.
Let's discuss some important formulas. Distance is equal to speed into time. Speed is equal to distance divided by time. And time is equal to distance divided by speed. Now come to the point, what type of sum you have to solve in this worksheet or under this topic. I'm going to share an example with you. जिस तरह के सम होंगे इस क्वेश्चन में, उसमें होगा कि फॉर एग्जाम्पल कि एक ट्रेन है और वो एक ट्रेन जो फास्ट स्पीड से चल रही है या अपनी स्पीड से चल रही है, तो वो जो ट्रेन है उसे एक यहाँ पर खड़े हुए एक फिक्स पोल को, वो पोल कोई सिग्नल पोस्ट भी हो सकती है, जैसे जो ट्रेन के सिग्नल पोस्ट लगे होते हैं, वो कोई बिजली का पोल हो सकता है, वो कोई टेलीफोन का पोल हो सकता है, कोई भी पोल है, उसको क्रॉस कर रही है। तो हमें उस उस पोल को क्रॉस करने का टाइम पता करना है कि कितने टाइम में वो ट्रेन जो है उस पोल को क्रॉस कर लेगी। लेकिन ये कब माना जाएगा कि ये पोल क्रॉस हो गया? देखिए, जब इंजन बिल्कुल इसके पास यहाँ से स्टार्टिंग हुई, सी हियर, यहाँ से स्टार्टिंग हुई, एंड व्हेन द कंप्लीट द ट्रेन विल पास दैट पोल, जब वो पूरी की पूरी ट्रेन उस पोल को पास कर लेगी, तो उसको कितना टाइम लगा। अब यहाँ पर इस पोल की जो डायमेंशन है उसको हमने नेग्लिजिबल डायमेंशन मानना है। नेग्लिजिबल डायमेंशन का मतलब कि इसकी जो चौड़ाई है, मोटाई है, वो इतनी नहीं है कि उसको कंसिडर किया जाए। आगे और क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमें होंगे कि एक ट्रेन है, वो एक प्लेटफॉर्म को कवर करने में, क्रॉस करने में, या फिर एक टनल को क्रॉस करने में कितना टाइम लेती है। अब प्लेटफॉर्म तो का बहुत बड़ा होता है, टनल भी बड़ी होती है, तो उसको तो हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, उसकी लेंथ को, तो डायमेंशन को, लेकिन ऐसे पोल्स की डायमेंशन को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। Let's solve the example related to this topic. Your example is a train 400-meter long. This is the length of the train. Is running at the speed of 72 km per hour. This is the speed of train. How much time does it take to cross a telegraph post? Telegraph post means that kind of pole. First of all, see here, the length of train is given in meters, but speed is given in kilometer per hour. We will change this speed into meter per second so that this unit and this unit will become same. How we can change? We know that there are 1000 meters in 1 kilometer and there are 3600 seconds in 1 hour. How? There are 60 minutes in 1 hour and there are 60 seconds in 1 minute. 60 multiplied by 60 will become 3600. See here, the given speed is 72 km per hour. 72 multiplied by 1000. I have changed these 72 kilometers into meters by multiplying 1000. Now I will divide it by 3600 seconds. When we will reduce it into lowest term by cutting, you will get 20 meter per second. Per means 1 second. एक जो ट्रेन की स्पीड है वो 1 सेकेंड में 20 मीटर जाती है. Per means 1. Now we have to find the time to cross the telegraph post. Prepare the table of this type. We have already made this kind of tables in previous worksheets. Here it is the distance covered and here it is time taken. We will first, we have this speed.
because one speed is in kilometer per hour, other is meter per second. We will choose this one, meter, because the length of train is in meters. 20 meter. See here, 20 minute. In how much time? 1 second. 1. From where we will get this one? This par. Par means 1. This slash. Per second. In 1 second, train will move 20 meter. Now, length of train is 400 and we have to find the time. We have assumed x here. This is direct variation. In this worksheet, you have to check whether it is direct or inverse variation. How it is direct variation? If distance will increase, then time will increase because more distance will be covered in more time. So in direct variation, what we do? 20 divided by 1 is equal to 400 by x. Cross multiply and you will get this answer. You have solved this type of sum and the value of x will be 20. It means the train will take 20 seconds to cross the telepost graph. Next topic. Here we have to find the time taken by a moving train to cross platform, bridge, tunnel or a standing train on the nearby rail track. Crossing a stationary object. Stationary means fixed. That is not moving. Only train is moving. Having some length. It is not same in your books. Correct it. It is some length. Okay. So let us suppose train is coming from this side. And this train has to cross this much length of tunnel. Let us suppose it is tunnel. And when it will be considered that the train has crossed when the complete train comes out of the tunnel. जब पूरी की पूरी ट्रेन टनल से बाहर आ जाएगी, ये देखिए जहाँ पे उसका बिल्कुल पॉइंट जो है लास्ट पॉइंट यहाँ पे वो बाहर आ रहा है. यहाँ से स्टार्टिंग से लेके when it enters this tunnel and when it crossed completely. How much time will be taken by a moving train to cross this tunnel? Let's solve the example of this type. A train 360 meter long, length of train is 360 meter, is running at a speed of 45 kilometer per hour. What time will it take to cross a 140 meter long bridge? Now, this length is not negligible. इसे neglect नहीं कर सकते, इसे हम छोड़ नहीं सकते. इसको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड और है. First of all, because the length of train is given in 360 meter, we will change the speed into meter per second. Method is same which I have told you in last example. What you will do? Multiply 45 by 100 divided by 3600. Then change it into lowest term by cutting. You will get 25 over 2. Then divide it and change it into points. 12.5 meter per second. Now what is the total distance? What is the total distance? Length of bridge is 140. Length of train is 360. Total distance will become 500. जब भी आपको यहाँ पे ब्रिज की लेंथ दी हो, प्लेटफॉर्म की लेंथ दी है, टनल की लेंथ दी है, तो आपने उस लेंथ को ट्रेन की लेंथ में प्लस करना है, तो वो टोटल डिस्टेंस बनेगा. Now let
The required time to cross the bridge is x seconds. Draw the table, this type of table. Here it is distance, here it is time. 12.5 meter in 1 second. See here 12.5 meter per second. Per means 1 second. So I have written 1 here. And what is the total distance? It is 500. How it is 500? Length of train plus length of tunnel, or sorry, bridge. And this is, we have assumed the time taken is x. This is direct variation. Because distance is increasing, it means time will also increase. So in direct variation, we will divide 12.5 by 1. See here, is equal to 500 over x. Then by cross multiplying, when we solve it, you will get 40. Means your answer will be 40 seconds. It means the train will take 40 seconds to cross that bridge. Here it is worksheet number 3. Solve this worksheet and share your doubts. We will meet again in next video soon with the solution of this worksheet. Thank you so much. I hope you will like this video. If you like this video, then press the like button and subscribe my channel. I'll keep sharing the videos of your next chapters during holidays also. So it will be beneficial for you, the subscription of my channel. You will get the videos notification through subscription.